In 12th Science Biology, we are starting unit number 5. Title of unit is Genetics and Evolution. This unit includes 3 chapters. Chapter number 5, which is Principles of Inheritance and Variation. Chapter number 6, that is Molecular Inheritance. And chapter 7, Evolution. Now chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation, is considered as a classical genetics, while chapter 6, Molecular Basis of Inheritance, is considered as a molecular genetics. In classical genetics, we will study classical aspect regarding discovery of various genetic processes and classical aspect of genetics, while in chapter 6, we will study various molecular processes related to genetic transmission. In chapter 7, we will study various processes related to evolution and influence of genetics, especially population genetics on evolution. So you can say unit 7 is all about genetics and molecular genetics. Now other units like unit number 9, which include chapter 11 and 12 of biotechnology, are also directly related to genetics. And in 11th Science, chapter 8, 9 and 10 are also very much related to genetics. So study of genetics is very important. You need to develop proper concept of genetic, which are very much helpful in 12th as well as the 11th Science. So we will start here, chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. Now we should understand first what is inheritance and what is variation. Inheritance. It is a process by which characters are passed on from parents to progeny. I repeat, it is a process by which characters are passed on from parents to progeny. Inheritance is considered as similarities of trait, means similarities of characters between parents and progeny, and it is because of a heredity. That similarity is because of a heredity. तो अगर इस चीज को हम जनरल टर्म में पहले समझें, तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे मदर और फादर होते हैं, या तो इवन हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होती है, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो हम थोड़े बहुत कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी उनके साथ शेयर करते हैं. ये कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, हाइट, आई कलर, अपीयरेंस ऑफ अ हेयर और अ लुक ऑफ अ फेस. तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ. ये सिमिलरिटी हम कह सकते हैं हमारे स्किन कलर के केस में हो सकता है, हमारे हेयर कलर के केस में हो सकता है, हमारे हाइट के केस में हो सकता है, हमारे फेस के लुक के केस में हो सकता है. ऐसी सिमिलरिटी हम दूसरे पर्सन के साथ, जो अनरिलेटेड पर्सन है हमसे, उनके साथ शेयर नहीं करते हैं. मतलब कि पेरेंट जनरेशन से कैरेक्टर्स पास्ड ऑन हुए टू प्रोजेनी जनरेशन, और यही कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके थ्रू पेरेंट्स अपने कैरेक्टर्स प्रोजेनी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. हम इसके वजह से सिमिलरिटीज शेयर करते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ. तो बेसिकली हेरिडिटी इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ सर्टेन ट्रेट और सर्टेन कैरेक्टर्स फ्रॉम parent to progeny, and because of that there is a similarity of characters between a progeny and parents. अब बात करते हैं वेरिएशन के बारे में. वी शेयर सर्टेन कैरेक्टर्स विथ अवर पेरेंट्स एज वेल एज विथ अवर सिबलिंग्स. मतलब कि हम थोड़े बहुत कैरेक्टर के बारे में सिमिलर होते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ एज वेल एज हमारे सिबलिंग, मतलब के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ. लेकिन ये सिमिलरिटी 100% नहीं होती है. वी डिफर एट अ सर्टेन डिग्री इन कैरेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू अवर पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, और यही डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन.
बराबर। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारे पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच, मतलब हमारे बीच और हमारे पेरेंट्स के बीच सर्टेन कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी जरूर है, बट वी आर नॉट जेरोक्स कॉपीज ऑफ आवर पेरेंट्स। लेकिन ये सिमिलरिटी 100% नहीं होती है। हम हमारे पेरेंट्स के जेरोक्स कॉपी नहीं हैं। हम ऐसा कहेंगे कि सर्टेन कैरेक्टर्स में हमारे बीच और हमारे पेरेंट्स के बीच एक डिफरेंस देखा जा सकता है, और यही डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। तो एक ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। We all are Homo sapiens sapiens. We all belong to same species, but with respect to characters, we do not share identical similarity. मतलब कि सारे Homo sapiens कैरेक्टर के केस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो अगर हम वेरिएशन को प्रॉपरली एक साइंटिफिक वे में डिफाइन करें तो हम कहेंगे it is a degree by which a progeny differ from parents. तो वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम अ पेरेंट्स. इट इज अ डिफरेंसेस अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सेम स्पीसीज. तो दिस डिफरेंसेस आर रिफर्ड एज अ वेरिएशन. तो बेसिकली inheritance and variation both are related to genetic transmission, and inheritance means it is a process by which characters or traits are passed on from a parents to progeny. It is a similarity between a parent generation and a progeny generation, which is referred as a heredity, while the variation is a degree by which a progeny differ from a parent. It is a difference among organisms of a same species. Now genetics, we will use this term genetics frequently. So what is genetics? It is a branch of a biology that deals with inheritance and variation. So basically we will study this inheritance and variation in a branch of biology called genetics. तो हम जो इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजी की जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को कहते हैं जेनेटिक्स.